Hi Lalita, good morning. Morning, sir. How are you? I'm good. I'm good. How are you? I'm also good, sir. Today we will finish globalization, right? Yeah, one question, sir. Just a Yeah. sec. Yeah. Go ahead. Am I visible? No, sir. I hope. Now you are visible. Yeah. Hmm, So, sir, okay. ये मैं बोल रही थी कि Hmm, इसमें ना जैसे सिलेबस में इट इज रिटन ग्लोबलाइजेशन रिस्पॉन्सेज फ्रॉम डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज. hmm. तो ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, मतलब हम जो कर रहे हैं मैं उससे थोड़ा रिलेट नहीं कर पा रही Okay. कि Okay. Acha. What is cultural imperialism? When I say cultural imperialism, right? यस. When I say the new colonialism, right? When the USA and Europe and is imposing their own term and condition regarding trade, regarding culture, regarding right on the third world. What does it mean? Right? This is impact. When जब मैं बोलता हूँ कि जब कोई author बोलता है कि globalization is nothing but it is a westernization, it is a Americanization, right? Yes, sir. It is a McDonaldization. It is the imposition of Western economy, Western culture, Western rules and regulation on the third world. Right? This is the impact. The new colonialism, cultural imperialism, the impact. Right? And yes, are you तो ये getting my सर point? यहाँ पे रिस्पॉन्सेज का मतलब इम्पैक्ट है. Impact. Yes. ये Response फ्रॉम क्या से है? लगा है. रिस्पॉन्सेज फ्रॉम डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटी, मतलब कि डेवलप्ड सोसाइटीज जो है वो ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है उनका, Right. ऐसा, And और डेवलपिंग का. exactly. What is the impact? What is the fourth world? जब मैं fourth world की बात किया, तो fourth world is about the inequality that is existing in every country, even in the first world and even the third world, right? Developed world and developing world, but who are losing more? आज मैं और बात करूंगा जब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करूंगा, तो who are losing more, right? So जब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की आज बात करेंगे कि कौन लूज कर रहा है, तो हम अभी बात करेंगे आपको. जैसे मैं आपको बताया कल्चर के बारे में कि वर्ल्ड वाइड 40% जो आपका टेलीविजन प्रोग्राम है वो यूएसए का है, राइट? यस सर. लैटिन अमेरिका थर्ड वर्ल्ड, लैटिन अमेरिका में जो प्रोग्राम है वो 77% जो प्रोग्राम है वो यूएसए का चलता है. व्हाट डज इट मीन? Right? When I say even we are living in third world and we starts morning with using the US or UK or European product, right? Or even Chinese product nowadays, right? What does it mean? It means this is and how the world is dividing. जब मैं divide की बात करता हूँ आज और economic divide की बात करेंगे, how the world is divided, right? So जैसे pollution की बात है, pollution उगाता कौन है या ई वेस्ट की बात है? ई वेस्ट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है? डेवलप्ड कंट्री. और इसका डिकम्पोजिशन कहाँ पे होता है? थर्ड वर्ल्ड में, राइट? डेवलपिंग कंट्री में. दिस आर द रिस्पॉन्सेस. ओके. तो सर ये जो फोर्थ वर्ल्ड वाला कॉन्सेप्ट है ये किसका है, डेवलप्ड का कि डेवलपिंग का? फोर्थ वर्ल्ड का तो मतलब सबका है. वो द फोर्थ वर्ल्ड जो इमैनुअल कैस्टल बात कर रहे हैं कि इनइक्वालिटी, अनइवननेस वो हर जगह पैदा हो रहा है. वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में दो तरह की बातें हो रही है. एक तो इलीट पैदा हो रहा है ना, जो पूरी दुनिया की हर प्रोस्पेरिटी को यूज कर रहा है, राइट? वो एक सिमिलर लाइफ जी रहा है, होमोजेनियस लाइफ. फॉर एग्जांपल, अगर कोई आईफोन यूज कर रहा है अमेरिका में, तो इंडिया में भी इलीट यूज कर रहा है.
राइट। अगर कोई कंप्यूटर यूज कर रहा है, मान लीजिए डेल का या कोई दूसरे कंप्यूटर कंपनी का, वो भी यूज कर रहा है सुबह सुबह, अगर वो कॉफी पी रहा है नेस्ले का, तो ये इंडिया के लोग भी कॉफी पी रहे हैं नेस्ले का, राइट। अगर वो पिज्जा खा रहा है मॉर्निंग में, आप मान लीजिए लंच में ये भी पिज्जा खा सकता है, पिज्जा है इसके पास अवेलेबिलिटी। द elite are living the similar homogeneous life and they are the wealthy, actually the elite people, fine. Yes, sir. At the another hand, there are vulnerable people, there are poor, right, who are marginalized, excluded, right, who are exploited by the market system, right, and they are the victim basically, right, and they are living in a certain place within a city, like जैसे आप जैसे मुंबई का धारावी है, मुंबई धारावी, राइट, या मान लीजिए कि घेटो है अमेरिका में, कल मैं बता रहा था अमेरिकन घेटो, राइट। सो धारावी, अमेरिकन घेटो, यू नो, ऐसे हर जगह आपको ऐसे दुनिया मिल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड फोर्थ वर्ल्ड, ओके। ठीक है सर। चलिए इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन देखते हैं क्या है। ओके, you know the word globalization, right? Yeah. You know the meaning, what is globalization? Yes, sir. Okay, now can you explain what is economic globalization? Economic globalization, I think कि हम more freely without any hindrances trade कर सकते हैं with the other countries. Trade, commerce, yeah, capital, how capital flow from one country to another country, right? Yes. Labor, even services. कल हम बात कर रहे थे कि कैसे सॉफ्टवेयर कंपनी जो है, अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी और सोर्स करती है इंडिया, राइट, बेंगलुरु में, मतलब बेसिकली बेंगलुरु में, कर्नाटका, राइट, और हैदराबाद समटाइम्स, फॉर देयर सॉफ्टवेयर, you know, requirement, services requirement, right? Even now the health services are being outsourced anyway. So economic globalization means, you know, interconnectedness, or you know, a free flow of trade, commerce, capital, labor, services around the world, right? Yes. Right. And it is also, you know, increasing penetration from one country to another country. If you take the company called like Dell, right, या कोई फोन का नाम लीजिए सैमसंग, राइट, और कोई कंपनी का और ले लीजिए टोयोटा, यू नो टोयोटा कार, yes, बड़ी बड़ी कार बनाती है टोयोटा, छोटी भी बनाती है, बड़ी भी बनाती है। Which car do you like? टोयोटा का, फॉर्च्यूनर, right. So this company, this, you know, this trade is not limited to one country, it is a global one. Even Samsung is a global one. You can find in India, पाकिस्तान में भी लोग यही यूज कर रहे हैं, you know, और कहीं अदर कंट्री में भी लोग यही यूज कर रहे हैं। टोयोटा अगर बात करें तो मैं बता रहा हूँ, हर कॉन्टिनेंट पे टोयोटा की कंपनी है, हर कॉन्टिनेंट पे सैमसंग है, हर कॉन्टिनेंट पे डेल है, राइट। So economic, you know, the penetration, the particular, you know, trade, commerce, labor penetrated each continent, right? And there is a global infrastructure of the international institution like IMF and World Bank, right?
हम वर्ल्ड बैंक और IMF को अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में बाद में. So these are the IMF, World Bank and WTO. These are the global institutions which are regulating the trade and commerce through the world, right? Of the entire world. Okay? Yes, sir. So थोड़ा सा economic and economic globalization के बारे में लिख लीजिए. लिखिए. लिखिए. Economic globalization refers to Yes, sir. interconnectedness Yes, sir. of trade, commerce, capital, capital, labor, and services. World. Simple definition, right? Yes, sir. Refers to interconnectedness of trade, commerce, capital, labor, and services worldwide. Right? Yes, sir. There are uninterrupted flow. Uninterrupted flow of capital and trade due to MNCs and TNCs. Due to MNCs and TNCs, Yes, sir. and innovation of new technologies. New technologies and communication. There are worldwide penetration of global product. Samsung, LG, no, Philips, Onida, Sony, कुछ भी आप लिख दीजिए. Sony, right? Adidas, right? Puma, बाजार में जाइए ना कितनी कंपनियां हैं, right? Yes. Dell, Toyota, etc. The World Bank and IMF are the global economic institution global economic institutions Yes, sir. which are regulating international financial market. International financial market. Yes. WTO regulates
the norms and rules of international trade. Yes. The entire world is becoming Yes, sir. a world economy, world or global economy, world economy. Yes. Right? So sense पता चल गया कि क्या है economic globalization? Yes, sir. Okay. Got the idea? Yeah. अब लिखिए the view of globalists. Yes, sir. 1 minute. So now you got the idea of what is economic globalization? Yes, sir. So the economic globalization, see, globalist क्या कहता है कि world has become an integrated global economy, right? A single fully integrated economy, right? Internationalist कहता है कि नहीं, अभी भी ऐसा नहीं है. You know, nation state is important, and you know, nation state are the real decision makers whether they allow, right, even the WTO, the rules or IMF rules within their national territories or not. और ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट कहता है कि देखो तुम लोग बकवास कर रहे हो, जो नेशन स्टेट है और ग्लोबल एक्टर्स है, दो both are interacting each other, and there is a transformation. They are going under transformation, right? So there, either it's not either कि global institution जीत रहा है या ये जीत रहा है, no, it is a kind of win-win situation. Okay. Yeah. For both. ऐसा ट्रांसफॉर्मेशनिस्ट में बोला. अभी बताता हूँ. ग्लोबलिस्ट का पर्सपेक्टिव पता है आपको? ग्लोबलिस्ट क्या बोलता है? इसमें दो खेमा है यहाँ पर. एक है ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव, और एक है पेसिमिस्टिक, राइट? या. तो ये तो हमेशा जो पेसिमिस्टिक है वो थर्ड वर्ल्ड की बातें करता है, वो डेवलपिंग कंट्री की बातें करता है, वो डेवलपिंग कंट्री का पर्सपेक्टिव है पेसिमिस्टिक का. कि आप देखेंगे, जब मैं पढ़ाया आपको कल्चरल इंपीरियलिज्म, यहीं से पढ़ाया आपको, जब पढ़ाया मैंने कि कैसे जो इकोनॉमी है, पर्टिकुलर यूएस इकोनॉमी और यूरोपियन इकोनॉमी, कैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के ऊपर एक इम्पोजिशन है, राइट? एंड विदाउट ऑक्युपाइंग टेरिटरी दे आर गवर्निंग द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री. ओके, ये पॉजिटिव ग्लोबलिस्ट सारे हैं यूएस और यूके वाले. मैं अभी बताता हूँ. यूएस एंड यूके, जापान, ये डेवलप कंट्री का पर्सपेक्टिव है, रिस्पॉन्स है पॉजिटिव. और जो पेसिमिस्टिक है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के, डेवलपिंग कंट्री के रिस्पॉन्स है ये ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ओके, यस सर, यू आर गेटिंग द आइडिया? या, राइट. इंटरनेशनलिस्ट जो है वो प्रॉपर आपको निगेट करता है ग्लोबलिस्ट के पर्सपेक्टिव को, और कहता है कि ऐसा नहीं कि ये अभी आया है, पहले भी था. हाँ, 50 साल पहले भी था, 200 साल पहले भी था. हाँ, अब बढ़ गया है, राइट? अब ट्रेड बढ़ गया है, कॉमर्स बढ़ गया है, माइग्रेशन बढ़ गया है, ये ठीक है. बट ऐसा नहीं कि ये पुरानी चीज नहीं है, ये पुरानी चीज ही है, अब नया रूप ले लिया है, राइट? ज्यादा हो रहा है. और नेशन स्टेट का इंपॉर्टेंट अभी भी है. नेशन स्टेट इज अ की प्लेयर टिल नाउ इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. ये कहता है ग्लोबलिस्ट, क्या कहता है? नहीं, जो ये ग्लोबल एक्टर्स हैं, राइट, ये जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स है,
जो MNCs है, TNCs है, WTO है, IMF है, they are the real actor of international politics. Right? Yes, sir. So you cannot resist globalization. But internationalist कहता है कि ये देखो नेशन स्टेट का रोल बहुत बड़ा है. हाँ, तुम जो बकवास कर रहे हो कि ट्रेड बढ़ गया है, ट्रेड पहले भी था, नेशन स्टेट पहले भी था, माइग्रेशन पहले भी थी, अभी भी है. नेशन स्टेट मेन रोल प्ले करता है, राइट? जो डिसीजन लेता है वो नेशन स्टेट लेता है, और नेशन स्टेट की जो सोवरेनिटी है, दे आर स्टिल इंटैक्ट. फाइन. ग्लोबलिस्ट कहता है कि नेशन स्टेट का सोवरेनिटी तो खराब हो रहा है, खत्म हो रहा है, राइट? दे आर नॉट डिसीजन मेकर्स. डिसीजन मेकर्स आर द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, राइट? Yes, sir. नेशन स्टेट आर ओनली डिसीजन टेकर्स. ये लोग तुम बकवास कर रहे हो, नेशन स्टेट ही डिसीजन बनाता भी है, लेता भी है. हाँ, नेशन स्टेट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो भी कोई भी एमएनसीज को अपने यहाँ पे काम करने दे, ना करने दे, है ना? अब ये क्या कहता है, क्या इंटर ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट, कि देखो तुम भी एग्जैजरेट कर रहे हो कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, इतना बड़ा मतलब बलून जैसे फूल गया है, और तुम भी बात कर रहे हो कि तुम भी एक अपोजिट साइड में बात कर रहे हो, है ना? कि एक साउथ में बात कर रहा है तो एक नॉर्थ की बात कर रहा है. बात ऐसा नहीं है, बात कहीं बीच की है, और ये है कि जो एक्चुअली पिछले WW2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चीजें बदली है, राइट? नया नया ट्रांसफॉर्मेशन, नया नया ग्लोबल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टेंस में आए हैं, नए नए एक्टर्स आए हैं, जैसे WTO आया है, IMF आया है, वर्ल्ड बैंक आया है. अलग इंस्टीट्यूशन है, जैसे G77 है या G8 है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आए हैं. बट नेशन स्टेट भी ऑलरेडी है वहां पर, है ना? Yes. अब ये नेशन स्टेट और जितने भी इंस्टीट्यूशन है, ये दोनों को इंटरैक्ट करते हैं, ये दोनों आपस में बात करते हैं, और दे बोथ what I say, yes, try to interact and try to cooperate each other, right? They are not opposite to each other. जैसे ग्लोबलिस्ट बोलता है कि नेशनल स्टेट का जो सोवरेनिटी है वो खत्म हो रहा है, मतलब वो डायरेक्ट नेशन स्टेट के अपोजिट में ठहरा रहा है इसको. और नेशन स्टेट जो कह रहा है कि ग्लोबल जो तुम्हारा जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है वो कुछ ही नहीं है, नेशन स्टेट ही सब कुछ है. ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट कह रहा है कि दोनों इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्लोबलाइजेशन जो फिनोमेना है बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, इसको समझने की बहुत अच्छे से जरूरत है. दोनों लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, एंड वर्ल्ड इज गोइंग अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? Yes, sir. ओके, तो आइए हम ग्लोबलिस्ट की बात करते हैं. पॉजिटिव ग्लोबलिस्ट, द रिस्पॉन्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड और डेवलप्ड कंट्री. तो जब डेवलप्ड कंट्री की बात करेगा तो सारे पॉजिटिव ग्लोबलिस्ट की बातें करना है आपको, राइट? थोड़ा क्रिटिक. हाँ, जब डेवलप्ड का पूछेगा, हाँ, तो पॉजिटिव ग्लोबलिस्ट की बातें करना है, राइट? एंड डेवलपिंग फ्रॉम रिस्पॉन्सेस फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री, तो आपको पेसिमिस्टिक ग्लोबलिस्ट की बातें करनी है, राइट? और आपको एक, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल बताता हूँ कि मान लीजिए क्वेश्चन आएगा कि मैं अदरवाइज आपको क्वेश्चन 8-10 एक बार दे दूंगा कल, राइट? यस सर. ग्लोबलाइजेशन के ऊपर कि क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर द consequences, देखिए, what are the consequences of economic globalization on developing country? ये क्वेश्चन आ गया कि what are the consequences of economic globalization on developing countries, right?
अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, आपको पहला चीज डिसाइड करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, पेसिमिस्टिक, नो, एक्सप्लेन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, मतलब लेकिन राय उन्हीं की लिखनी है ना इसमें, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज अभी मैं बताता हूँ। आपको एक्सप्लेन करना है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को। पहला इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है क्या, आपको हेड बनाना है, सर, राइट। देन आपको फिर बॉडी पे आना है, राइट। नाउ आपको रिस्पॉन्सेस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। आप इसमें आपको पेसिमिस्टिक बातें करनी है, राइट। एक लाइन आपको पॉजिटिव ग्लोबलिस्ट की बात करना है। पॉजिटिव ग्लोबलिस्ट क्या बात करते हैं, ये कहते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, राइट। फिर आपको पेसिमिस्टिक ग्लोबलिस्ट की बात करना है, और थर्ड जो आपको करना है, कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट की बात करना है। मतलब कि देखिए, ऐसा नहीं है कि सारा चीज बैड ही हो रहा है डेवलपिंग कंट्री में, राइट। देयर आर मेनी थिंग दैट इज गुड इन डेवलपिंग कंट्री, ओके। तो ऑल consequences are not bad even in developing countries, right? So if you see, मैं अभी बताऊंगा कैसे poverty कम हो रहा है। So अभी मैंने पढ़ाया नहीं, बस आपको क्वेश्चन दे दिया ये वाला। ये क्वेश्चन लिख लीजिए और आप आंसर खुद से लिखिएगा, राइट। यस मैं आज so you know what is economic globalization? Yes sir. Okay, now come to what is what is the response of a positive globalist, right? The positive globalist speaks on the behalf of the developed country, right? बट वो बोलते हैं कि मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, बट आपको मेजरली जो लिया जाता है वो ऐसे लिया। वो डेवलप्ड कोई वर्ल्ड समझ रहे होंगे ना। डेवलप्ड वर्ल्ड भी है, डेवलप्ड वर्ल्ड बोलते हैं ना। हाँ तो वही ना, वो वाली ये ऊपर, हाँ, यूएस वाली, हाँ, यूरोप, राइट। थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग, और डेवलपिंग वर्ल्ड बोलो या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोल दो, दैट्स द सेम थिंग, सेम, राइट राइट। थर्ड वर्ल्ड बोल दो या डेवलपिंग कंट्री बोल दो, सब सेम, राइट। नॉर्थ बोल दो या डेवलप्ड कंट्री बोल दो, सब सेम है, ओके। यस। Okay, now come to the what positive globalist says. लिखिए, the view of positive globalist. सर मैं एक सजेशन लूं आपसे। हाँ हाँ बोलिए। अभी अभी मेंस का राइटिंग करना चाहिए ना अब? हाँ, अब तो करना चाहिए। अभी तो तैयारी, अभी आपको मेंस का ही तैयारी करना चाहिए, अभी टाइम है ना। यस सर, अभी तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने तैयार है ना, आपको 2 महीने मेंस की तैयारी करें, 2-3 महीने करना चाहिए। 5 तो नहीं कह रहा, अक्टूबर को नहीं काउंट कर रहे, क्योंकि अक्टूबर में स्टार्टिंग, अगर 4 महीना है ना, पर तब भी है। हाँ हाँ, 1 महीना आराम से आप तैयारी कर सकते हैं, फिर बाद में प्रीलिम्स। हाँ, बाद में प्रीलिम्स। अदरवाइज प्रीलिम्स की तैयारी ऑलरेडी होगी ना, थोड़ी मोड़ी, ऐसे थोड़ी है नहीं होगी। नहीं वो तो है अब तो। यस। चलिए लिखिए, व्यू ऑफ पॉजिटिव ग्लोबलिस्ट। मैंने सर, आई वाज सेइंग कि हम PSIR का जब फुल टेस्ट लेंगे, जब मेरा एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब आप लेंगे ना, मतलब? बिल्कुल 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 लेंगे, बिल्कुल लेंगे, टेंशन मत ले। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक टेस्ट नहीं, ज्यादा लेंगे, राइट। नहीं सर, मतलब इनिशियली जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था कहीं पे भी, तब तो आई वाज इन टेंशन फॉर PSIR, लेकिन अब लिटरली मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब सही लग रहा है। आई एम हैप्पी दैट आई हैव जॉइंड यू। ओह थैंक यू सो मच। सो राइट डाउन व्हाट इज पॉजिटिव ग्लोबलिस्ट, क्या कहते हैं।
ये कहते हैं it Yes, is sir. a it is a it is a process of corporate structuring, corporate structuring corporate structuring corporate structuring of worldwide market that creates growth and growth, profit and opportunity for all. Clear? It is a process of corporate structuring of worldwide market. ये कॉर्पोरेट, ये दुनिया को, ये एक कॉर्पोरेट का एफर्ट है दुनिया को, एक दुनिया की मार्केट बनाने का, जो ग्रोथ, प्रॉफिट एंड अपॉर्चुनिटी सब के लिए क्रिएट करता है. राइट? Yes, sir. ओके, लिख लिया आपने? पढ़िए तो Yes. जरा एक बार पढ़िए तो सेंस आ रहा है कि नहीं? It is a process of corporate structuring of worldwide market that creates growth and profit and opportunity for growth, comma, profit and opportunities and opportunity for all. Okay. for all. Right? Yes, sir. सीधा सीधा. Okay. The vision behind is दूसरा पॉइंट लिखिए. The fundamental vision Yes, sir. are free flow of commerce, labor, capital, Yes, sir. so that Yes, sir. it may favor Yeah. everyone in the world market or in the global market. Right? Yes, sir. Next point लिखिए. The world economy are becoming interdependent due to dynamics of trade in goods and services, and flow of capital and technology.
Done? Yes, sir. इसी में लिखिए it is a integration of it is a integration of national market into a world economy, into the world economy, only the world economy. Yes, लिख लिया? sir. Done. Yeah. ऐसे लिखिए, इसी में लिखिए the world economy Yes, sir. the world economy is changing due to following five drivers of change. Five drivers of change. ये five drivers of change कौन कौन है अभी लिखाता हूँ, इसको लिख लीजिए. The world economy is changing due to following five drivers of change. Done, sir. Done? Yeah. Okay. पहला लिखिए इंटरनेशनल ट्रेड. पहला लिखिए इंटरनेशनल ट्रेड. Yes, sir. लिखिए it is growing. It is growing Yes, due sir. to low trade barriers, due to lower trade barriers, Yes, sir. technology flow, and FDI, foreign direct investment. टेक्नोलॉजी फ्लो लिखा आपने? Yes, sir. इसमें फिर से कॉमा लिखिए फाइनेंशियल फ्लो या हाँ या कैपिटल फ्लो लिख दीजिए. कैपिटल फ्लो, कॉमा improvement in communication technology, and increased labor mobility. Increased labor. FDI ऐसे मत लिखिए, पूरा the foreign direct investment इसी में लिखिए. Foreign direct investment अब लिख दीजिए FDI कैपिटल में, इसको स्मॉल मतलब एब्रिविएशन. FDI plays an important role in international trade. Right? Yes, sir. पहला इंडिकेटर हो गया, पहला ड्राइवर हो गया. दूसरा ड्राइवर है FDI. लिखिए तो सेकंड मतलब सेकंड लिखिए. Yes, sir.
सेकेंड लिखिए FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ऐसे लिखिए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस are investing different countries and making the process of production and consumption truly global. Truly global. Done, sir. Done. Third लिखिए MNCs, the multinational corporation. लिखिए they are the real actor of globalization. They are the real actor of globalization. ये एफडीआई में भी हमने एमएनसीज के बारे में लिखा, तो एमएनसीज का पॉइंट अलग क्यों? MNCs, yes, MNCs क्या यहाँ पर क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज इट्स फॉरेन कैपिटल जो है हम कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? अदर कंट्रीज में, राइट? लाइक यूएस के कैपिटल कहाँ पे इन्वेस्ट होगा? इंडिया में। और वो करेगा कौन? MNCs करेगी, MNCs TNC करेगी, राइट? अब राइट, सो MNCs TNC FDI करती है, बट MNC आर द रियल प्लेयर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, इसीलिए MNC को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, राइट? मतलब अदर देन एफडीआई उनका कोई और रोल भी है? वो एफडीआई तो करते होंगे सिर्फ? हाँ, FDI करते हैं, नहीं उसका MNC का बहुत बड़ा रोल है। MNC का केवल FDI नहीं है, MNC का न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, मार्केट, राइट? राइट, ओके, लिख लीजिए MNCs they are the real actor of globalization, सिंपल इतना लिखिए। डन सर। चौथा लिखिए ग्लोबल वैल्यू चेन प्रोडक्शन, ग्लोबल वैल्यू चेन प्रोडक्शन। लिखिए द मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम are interconnected the modern production system are interconnected यस सर। and their distributions are as per the global demand, as per the global demand, right? यस सर। अब पांचवा लिखिए IMF and World Bank, IMF, World Bank and WTO, तीनों लिख दीजिए, IMF, World Bank and WTO। डन सर। IMF, World Bank, WTO लिखिए। These are the global infrastructure
global financial infrastructure, financial and trade infrastructure, hmm, regulating finance and trade, Yes, sir. They are the director of single world economy. They are the director of the single world economy. Yeah, done, sir. हो गया? Yes. लिखिए. As a result, पैरा चेंज करके लिखिएगा. As a result, comma, the economic processes are increasingly stretched. Yes, sir. Stretched. The flow of trade, commerce, and capital are intensified. Right? Yes, sir. The comma फिर से लिख, comma डाल के डालिएगा. Economies are interpenetrated and a new global infrastructure is developing. New global infrastructure has developed. Developing has developed. Right? Yes, sir. Therefore, a single world economy, wherein events and decisions taken in a particular state have worldwide impact. जी बताइए. No, समझ गए. लिखिए. Therefore, a single world economy wherein को एक साथ लिखिएगा. WHEREIN एक ही साथ लिखिएगा. Wherein events and decisions taken in a particular state have worldwide impact. For example, लिखिए.
1997, 98 East Asian economic crisis, 2008 global financial crisis, 'लिख लिया? Yes, sir. Done. Yes. So ये जो दो एग्जाम्पल लिखा है मैंने, ईस्ट एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस, एक्चुअली 1997-98 में ईस्ट एशिया जो है, थाईलैंड, फिलीपींस वगैरह में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी। ये क्यों आ गई थी? क्योंकि यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में कुछ डिसीजन लिया गया था, राइट, इकोनॉमी से रिलेटेड। इवन 2008 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, ये क्यों आई थी? क्योंकि कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे कहां पर, और कॉर्पोरेट घराना थे, राइट, जहां पर अमेरिका में जो कोलैप्स कर गया और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट हुआ, राइट। यस सर। ओके। और इम्पैक्ट मतलब नेगेटिव हुआ तभी क्राइसिस। हाँ, उसका हाँ इम्पैक्ट नेगेटिव, मतलब ऑफ कोर्स फॉल्ट, अगर यूएस, अभी कहते ना कि यूएस को सर्दी होती थी पूरी दुनिया छींकता है, तो यूएस की इकोनॉमी इतना इंटीग्रेटेड है कि वहां पर कुछ इश्यू होता है पूरे वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट होता है, राइट। यस सर। हाँ, भले ही हमारे यहाँ कुछ हो तो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, राइट, बट वहां पर अगर कुछ होगा तो हमारे यहाँ तुरंत इम्पैक्ट हो जाता है, राइट। अब लिखिए। Can I come in 1 minute, sir? Just 1 या minute. श्योर। Yes, sir. या सो लिख लिया आपने? Financial, 2008 global financial crisis.
हाँ लिख लिया 97 98 East Asian financial crisis Yes, sir. and 2008 financial crisis. Yeah. Yeah. Then ये interpenetration का कुछ example मैंने लिखा है and you know it कि how Sony, Unilever, Nestle, Dell, Google, no, it is available in all the country, right? Country's economy. Yes. कुछ भी चेक करना होता है हम गूगल बाबा को पूछते हैं, है ना? Yes, sir. Right. Yes. कुछ भी कंफ्यूजन हुआ गूगल को पूछ लीजिए, राइट? किसी भी से रिलेटेड, हाँ गूगल सबका आंसर है गूगल के पास। कहीं कहीं रास्ता भी भटक गए तो गूगल से पूछ लीजिए किधर जाना है, वो बता देगा। वो सर एक ऐड भी है वो वैसे मतलब पूछ के तो देखो। हाँ मतलब वो इसलिए कि वॉइस सर्च भी कर सकते हैं। राइट, एग्जैक्टली। सो पूछ के तो देखो। तो सी द हाउ इंटरपेनेट्रेशन मैंने लिखा है, बट आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं तो अगर छोड़ भी सकते हैं, यू नो दैट, बट यू माइंड इट कि इंटर हाउ the multinational companies, MNCs, interpenetrated worldwide, right? Yes, sir. Yes. So you can see your multinational company, the worldwide, right? HSBC हर जगह मिलेगी, बैंक यहाँ पर भी है, हर जगह पे है, राइट? जैसे TMH की हम किताब पढ़ते हैं, टाटा मैकग्रो हिल, इंडिया में भी पढ़ते हैं, इंग्लैंड में भी TMH चलता है। हाँ बोल रहे ये लक्ष्मीकांत उन्हीं की तो है, हिल उसी की किताब है, राइट? सो चलिए अब देखते हैं कि हु आर द विनर एंड लूजर ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर से, राइट? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जो मेजर एक्चुअली थ्रस्ट है दैट इज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। ओके, यस, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, राइट? I think culture is a product, technology is a means, technology is a means, of, and culture is a product, right? But the main thrust of globalization is economic globalization, right? How the trade, how the multinational company like Coca-Cola, right, or McDonald's, McD has traveled from one continent to another continent, like Facebook or Twitter, YouTube, Nikon, Canon, सब हम लोग बात कर चुके हैं। Amazon मैंने बता दिया है, राइट? एडिडास की बातें कर दी मैंने, यूट्यूबर बात बता दिया मैंने, सैमसंग की बातें बता दी आपको, याहू यूज नहीं करता मैं कभी, तो मेरे दिमाग में आया नहीं। एप्पल की बात हम लोग कर चुके हैं, राइट? यस सर। ओवरऑल तो मैंने नाम तो सबका ले ही लिया था, right? So these are the multinational companies, MNCs company and corporations which are penetrating the economy worldwide. Okay? Yes, sir. What is WWW? World Wide Web, right? किसने इन्वेंट किया था? UPSC में क्वेश्चन आया था एक, who were the invention of WWW, World Wide Web? नहीं पता सर। Tim Berners-Lee. Anyway, so it's Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee. Okay. So who is the winner and who is the loser of the globalization? Basically economic globalization, यहाँ पे बात है। So अगर आप देखेंगे कि अगर एकेडमिक का क्लेम है, who are the winner? विनर तो वही होंगे US, UK, यूरोप टाइप्स, राइट? सो अगर ग्लोबलिस्ट से पूछेंगे तो बोलेंगे सब जीतने वाला है यहाँ पर, हम इंडिया भी जीत रहा है, अफ्रीका भी जीत रहा है, सब जीत रहा है, राइट?
बट वहीं पे पेसिमिस्ट ग्लोबलिस्ट से पूछेंगे तो वो बोलेगा कि डेवलपिंग कंट्री जो है, जो साउथ है, दे आर द रियल लूजर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, राइट? सो Yes, यहाँ sir. पर जो ग्लोबलिस्ट है उसमें पॉजिटिव और पेसिमिस्टिक, ये बोलेगा कि सब जीत रहा है, ऑल आर विनर, राइट? Yes, sir. और ये क्या बोलेंगे? यूएस, यूरोप, majorly these are the winner. Who are the loser? Third world countries. It is a developing countries. Right? Yes, sir. Okay. So अभी हम डिस्कस करेंगे इस बात को लेकर के। आइए हम पेसिमिस्टिक ग्लोबलिस्ट का देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला। ये तो हमने देख चुके ऑलरेडी, सो वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट। हमें देखना है पेसिमिस्टिक ग्लोबलिस्ट के बारे में, ये क्या कहते हैं। लिखिए द व्यू ऑफ पेसिमिस्टिक ग्लोबलिस्ट। द तो पेसिमिस्टिक इसमें जो ग्लोबलिस्ट, हमने ऊपर लिखा है पॉजिटिव वाला वही लिखना है। हाँ, who are the winner, right? Winner are the US, Europe, Japan, right? And there are claimed by the pessimistic globalist that the US, ऊपर मैंने लिखा लिया, जब ग्लोबलाइजेशन का डिफिनेशन लिखाया था तो फिर मैंने आपको लिखाया था कि कैसे इट इज अमेरिकनाइजेशन और मैकडोनल्डाइजेशन, right? Is it that US and Europe or Japan are imposing their own economic term and condition, their own culture to the third world, right? वैसे इसमें लिखिए loser of the economic globalization, loser of economic globalization, ऐसे, और या लिख लीजिए response of developing countries, response of developing countries. Yes, sir. लिखिए pessimistic, they think that, they मतलब pessimistic globalist, they think that globalization has its own negative impact, like Yes, sir. exclusion, like poverty, inequality, exclusion, poverty, inequality, exclusion, homelessness, and political unrest. They think that globalization has its own negative impact, like poverty, inequality, exclusion, homelessness, and political impact. Political impact की unrest. Political unrest, sorry, political unrest. सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, लिखिए इमैनुअल कैस्टल argues that globalization has created
two worlds: the world of elite, and world of poor. World of poor. Every country in every country, the global city in every country, global city is inhabited by prosperous class who uses world class goods and services. Yes, sir. In every country, global city is inhabited by a prosperous class who uses world class goods and services, but at the same time there are poor are excluded, marginalized, and exploited who are excluded, marginalized, and exploited, and they are a real victim of globalization. Right? Yes, sir. लिख लिया? They are the real victim of globalization. Yes, sir. Okay. देखिए, the has क्या चीज? the globalization has, next point देखिए, globalization has Yes, sir. imposed globalization has imposed लिखिए, economic and cultural imperialism on developing countries without occupying their territory. Cultural imperialism. Without occupying the territory of the developing countries. क्या लिखा आपने? एक second, sir. Globalization has imposed economic and cultural imperialism on developing countries without occupying the territory of developing countries. हाँ, without occupying their territories, ऐसे. Without occupying their territories. यही बंद कर दीजिए. हो जाता है ये. Done. Done? Yes. देखिए, the developing countries
countries are the real loser, as millions of people where Millions of people. of their lost livelihood, livelihood, land, and their forest habitation. Developing countries are the real loser, as millions of people lost their livelihood, land, and their forest dwelling habitation. Yes, sir. The record shows that the record shows that economic globalization makes things worse for the poor. Economic globalization makes things worse for the poor. Yes, sir. Worse for the poor, not better. Yes, sir. Next point लिखिएगा. The range of groups like tribal, women, minority communities, of the developing countries Yes. are being exploited due to economic globalization. हो गया? Due to economic globalization. Globalization, right? Yes, sir. Right. The people of the third world, the people of the third world are the real victim of pollution, especially e-waste disposition. E-waste disposition. Right? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. जोसेफ स्टिग्लिस, यहाँ लिखिए, ये नाम देखिए मैंने लिखा हुआ है. जोसेफ स्टिग्लिस has argued that has argued that Yes, sir. the international flow of trade is not positive. The international flow of trade is not positive. Yes, sir. Trade and communication लिख दीजिएगा. Yeah. The organized crime and terrorist networks, Yes, sir. are becoming global
are becoming global by using global communication and technology. Yes, sir. हो गया? Yes, sir. देखिए, spillage from damaged oil tanker. Spillage from damaged oil tankers is regularly reported as threat to both wildlife and human livelihood. Spillage from damaged oil tankers is regularly reported as a threat to both wildlife and human livelihood in many parts of the world. In many parts of the world. Yes, sir. Right. Okay. Many writers, next point, many writers, including Thomas Piketty, या ये लिखिए थॉमस पिकेटी का, मैंने कहा ये लिखिए थॉमस पिकेटी, including Thomas Piketty, many writers, Thomas Piketty and Joseph Stiglitz, many writers including Thomas Piketty and Joseph Stiglitz Yes. have recognized the growing gap between rich and poor, that have occurred during the globalization. Right? Yes, sir. The next point, लिखिए Marxist scholar Yes, sir. regards capitalism slash globalization as based on exploitation. Yes, sir. Michael Albert, for example, argues that when trade takes place between a large multinational corporation or company and a local entity in a poorer country, Michael Albert, for example, argues that when trade takes place between a large multinational company and a local entity in a poor country, benefit go to MNC. Yes, sir. As a result, Yes, sir. out of the 100 largest economy in the world, out of the 100 largest economies in the world, Yes, sir. right, 52 are not countries, they are corporations, they are multinational, they are MNCs. The result, out of 100 largest economies in the world, the 52 are not countries,
they are multinational corporation, they are MNCs. Yeah. In his book, The Crisis of Globalization, J.K. Galbraith argued that J.K. Galbraith, The Crisis of Globalization, J.K. Galbraith has argued that Yeah. Yes, sir. that the competition, deregulation, privatization, and open capital markets has undermined the economic prospects of poor countries. Economic prospects Yes, sir. of developing countries, right? Yes, sir. Done. Yeah. The Marxist has also argued that there are conflict of interest between the rich and the poor. Marxist has also argued that there is a conflict of interest between the rich के पास लिख दीजिएगा को ब्रैकेट में exploitative capital owning class, and the poor के पास ब्रैकेट में लिख दीजिएगा disadvantaged and vulnerable in the society. Yes, sir. लिख लिया आपने? Yeah. Like a feminist writer also has recognized that the feminist writers has also recognized that Yeah. induction of women in the global financial economy, Yes, sir. economy has exploited women. Yeah. Women are at double disadvantaged. Women are at double disadvantage. डबल डिसएडवांटेज के बाद आप कॉलम दे दीजिएगा. Yeah. One of class, one of ऐसे लिखे, one of class and one of gender. Yes. लिख दीजिएगा. They are generally low paid workers.
low paid workers favorable to the global economic system. Favorable to the global economic system. They are being exploited economically also and sexually also. They are being exploited economically also and sexually also. Done, sir. Right? लिखिए, लिख दिया? Yeah. नाम लिखिए, शासकीय शासन, लिखिए शासकीय शासन, शासकीय शासन Yes, sir. has identified three areas that where women labor go unrecognized. Shasakya Sasan has identified three areas where women labor go unrecognized and inequality reinforced. लिख लिए? Yes, sir. देखिए पहला, देखिए cash crops, commercial cash crops agriculture, commercial cash crop agriculture. देखिए it is totally depend on it is totally depend on, see that depend on, it is totally depend on women labor. It is totally depend on women labor. Women labor, right? Yes, sir. Like tea, example लिख दीजिए tea. Example given, yeah, tea. हम देखेंगे टी जब प्रदर्शित, टी is a cash crops, right? Tea, right? Tea, sugar, jute, sugar, टी, हाँ, sugar right? cane. हाँ. So commercial cash crops, agriculture, it is totally depend on women labor like tea. दूसरा लिखिए, देखिए ऑफशोर ऐसे लिखिए, ऑफशोर, अभी बताता हूँ ऑफशोर का क्या मतलब. ऑफशोर internationalized manufacturing production. Manure. Offshore internationalized manufacturing production. ऑफशोर मतलब मान लीजिए अमेरिका का कुछ है तो प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है? चाइना में हो रहा है, राइट? ऑफशोर इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, राइट? कल मैं बता रहा था कि ग्लोबल चेन वैल्यू क्या होता है कि प्रोडक्ट कहीं का सामान प्रोडक्शन कहीं पे हो रहा होता है, राइट? यस, राइट. अब लिखिए, इन दिस प्रोडक्शन सिस्टम
in this production system, woman is largely employed. आपको पता है जो बड़े बड़े हम पहनते हैं ब्रांड, लिवाइस, हाँ, न्यूमरे, यूएनओ, कपड़ा का बड़ा बड़ा ब्रांड बताइए मुझे 5 इन दिस प्रोडक्शन। जो हाँ 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 बताइए। टॉमी हिलफिगर, टॉमी प्रोडक्शन होता है, डब्ल्यू कहाँ पर होता है? हाँ, कहाँ पर होता है ये प्रोडक्शन? ये तो नहीं पता। ये कंपनी कहाँ की है जो आपने बोली है? इन दिस प्रोडक्शन सिस्टम वुमेन इज लार्जली एम्प्लॉयड। लिख दिया? यस सर। ये कंपनी है मतलब यूरोप की और यूएस की, लेकिन प्रोडक्शन कहाँ होता पता है आपको? बांग्लादेश में। टॉमी हिलफिगर सारे प्रोडक्शन ढाका में होते हैं, बांग्लादेश में प्रोडक्शन होते हैं। ब्रांड वहां लगता है, कपड़ा वहीं बनते हैं, वहां से जाता है हर जगह। जितने टॉमी हिलफिगर है, न्यूमरे, यूएनओ है, लिवाइस है, जिसका भी आप नाम ले लीजिए, राइट। देखिए, वुमेन ghettoized in assembly line work, with poor pay and prospect. एग्जाम्पल लिखिए, all brand of clothes of USA and Europe are produced in Bangladesh. क्या फायदा होता है उनको बांग्लादेश में प्रोडक्शन करने से? उनको वही यूएसए और यूरोप को तो यही होता है कि वो कॉस्ट जो है वो लेबर चीप मिल जाता है, लेबर बहुत चीप मिल जाता है, राइट। और तो जो मेजर फायदा होता होगा या नहीं? उनका नहीं होता कुछ? जी सर, बांग्लादेश प्रोड्यूस कर रहे तो बांग्लादेश को कोई फायदा है? बांग्लादेश को फायदा ये होता है, देखिए, ग्लोबलिस्ट को बोलेंगे तो ग्लोबलिस्ट बोलेगा कि ये फायदा हो रहा है, देखिए सबको जॉब मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, राइट। बट पेसिमिस्टिक बोलेंगे कि देखिए, अगर वुमेन को ये काम नहीं मिलता तो ऐसा नहीं कि वुमेन के पास ऑलरेडी जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है पूरा वो नल एंड वाइड है, ऐसा नहीं है। बट ऐसा आप करके आप क्या करें, उस वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, राइट। आप 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 15-15 घंटे काम करवाते हैं उनसे, राइट। यस सर। और उनका जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो डबल एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक तो उनके लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, बिकॉज एज पर क्लास वुमेन आर ऑलवेज पुअर, राइट। और जो सेकेंड है, I'm so sorry अगर मैं I'm disrespecting women, no, but this is the real situation which I'm saying. Women are largely poor, right? Land are not their name. आप देख लीजिए, लैंड किसके नाम का है? सारे मेल के नाम का है। घर किसके नाम पे? हाँ, आजकल शहरों में लोग घर बीबियों के नाम पे खरीद लेते हैं, राइट। हाँ हाँ, बेटी के नाम पे, बीबी के नाम पे, बहू के नाम पे। बट आप लैंड जो है अभी भी बेटा के नाम पे खरीदा जाता है। मेरे घर में मेरी दादी, मम्मी, सबके नाम। हाँ, तो दैट्स गुड ना, इट्स गुड, बट दिस इज नॉट अ जनरल स्टोरी। द जनरल स्टोरी
women are deprived of the economy, right? So एक तो मैंने क्या बोला, क्लास का डिफरेंस है, women are poor, so उनका लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है because they are poor, and secondly उनका सेक्सुअल का, उनके sexually they are being exploited, right? Yes sir. Okay, the third area लिख लीजिए, शासक या शासन कहते हैं. देखिए, न्यू पैटर्न ऑफ माइग्रेशन, न्यू पैटर्न ऑफ माइग्रेशन. पहला क्या था, कैश क्रॉप्स एग्रीकल्चर, दूसरा था ऑफशोर इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, बट वुमेन आर लार्जली एम्प्लॉयड. थर्ड इज न्यू पैटर्न ऑफ माइग्रेशन. ये सब डेवलपिंग कंट्री के रिस्पॉन्स है. मैंने 7-8 नाम तो लिखा ही दिए, राइट? Yes sir. लिखिए, the migration are stimulated by economic globalization. Migrations are stimulated by economic globalization. Yes sir. Sasan has argued that Who? शासन, शासकीय शासन जिसकी बात कर रहे हैं, उनकी किताब का नाम है ग्लोबल सिटी. Yes sir. She is a sociologist, बहुत बड़ी सोशियोलॉजिस्ट है. लेकिन शासकीय शासन has argued that, जरूर नाम लिखिएगा इनका, शासकीय शासन has argued that the new pattern of migration do not just happen. New pattern of migration do not just happen. They are one outcome. Migration pact, क्या लिखा आपने? Migration is stimulated by economic globalization. Session has argued that the new pattern of migration do not just happen. It is outcome. Right. Migration has a specific negative impact on women by bringing her into low-paid works, as well as into prostitution. Yes sir. लिख लिया? Yeah. Migration has negative impact on women, right, by bringing her into low-paid works as well as into prostitution. Yeah. The rapid growth of sex tourism, sex tourism or prostitution is directly linked to expansion of tourist industry. Tourist industry as well as with location of MNCs and TNCs. Yeah. फुल स्टॉप डाल दीजिए. Yes sir. एग्जाम्पल गिवन में लिख दीजिए.
Thailand, Philippines, Caribbean, West Africa and Brazil. एग्जाम्पल में लिख दीजिए थाईलैंड, फिलीपींस, कैरिबियन, वेस्ट अफ्रीका एंड ब्राजील. Brazil are growing sex, are growing their sex industry closely linked with expansion of tourism, and location of multinational companies. Multinational companies. Yeah. Sasen notes, or Sasen noted, Sasen matlab Sasakya Sasen, okay? Yeah. The Sasen noted that Yes, sir. prostitution is itself becoming a global traded commodity. Prostitution is itself becoming a global traded commodity. Yeah. Done? Yes, sir. The pessimistic globalist has pointed out the increasing gap between rich and poor countries. On one hand, yes, sir. And increasing gap between rich and poor in developed countries as well as developing countries. नहीं समझ में आया? अभी समझाते हैं, लिखिए. Pessimistic globalists have pointed out the increasing gap between the rich and poor countries on one hand. देखिए, एक तो है रिच एंड पुअर कंट्री के बीच में कि कितना डिवाइड है. हाँ, मान लीजिए रिच है, ये पुअर है, ये आर है रिच एंड पी है पुअर. इन दोनों के बीच में कितना डिवाइड है, ये कितना पुअर है और ये कितना रिच है. एक तो ये हो गया. And also increasing gap between rich and poor, in the developed country and as well as in developing country. एक कंट्री के बीच में अब रिच कितना है, यूएस के अंदर कितना रिच एंड पुअर है, और डेवलपिंग कंट्री मान लीजिए इंडिया, इसके बीच में कितना रिच एंड पुअर के बीच में डिफरेंस है. 3 एनालिसिस है. एक एनालिसिस तो ये हो गया कि रिच एंड पुअर कंट्री के बीच में कितना गैप है, और एक गैप हो गया विद इन रिच कंट्री के बीच में गैप कितना है. तीसरा ये हो गया विद इन डेवलपिंग कंट्री के बीच में गैप कितना है. Getting the point? Yeah. So note it down. या तीन सेंटेंस में लिख लीजिए तो थोड़ा आसान हो जाता है. तो मैंने लिखा है सर. The pessimistic globalists have pointed out the increasing gap between rich and poor countries on one hand, and on the other also increasing gap between within rich and within developing countries.
countries. Yes, right. So within rich and within developing. Got the idea? Yeah. Yeah. Look here. Thomas Piketty in his book, Capital in the 21st Century, Thomas Piketty in his book, Capital in the 21st Century, have demonstrated the widening gap at global scale. Yeah. And its consequences is demonstrated by Joseph Stiglitz in his book, The Price of Inequality. And its consequences Has been demonstrated by Joseph Stiglitz in his book. बड़ा confusion हो गया. एक second sir. Thomas Piketty in his book Capital in the 21st Century has demonstrated the widening gap at global scale and its consequences has been. आप कॉमा लीजिए, फिर फुल स्टॉप डाल दीजिए, मत स्ट्रेच कीजिए. हाँ. The consequences of widening gap, ऐसे लिखिए. The consequences of widening gap between rich and poor has been demonstrated by. एक second sir. Yeah. Widening gap between rich and poor has been demonstrated by. वो दिखा रहा है कि गैप कितना है और ये कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है. Yeah. The consequence of widening gap demonstrated by Joseph Stiglitz in his book, The Price of Inequality. Done? Yeah. Yes. So ये हो गया. ये डेटा लिखना है क्या कि मात्र 0.7% ऑक्युपाई. या ऑक्सफैम का रिपोर्ट आप देख लीजिएगा, ऑक्सफैम रिपोर्ट, किस चीज पर? इनइक्वालिटी रिपोर्ट. या कल मैं देख के लिखवा दूंगा. राइट. मैं कहीं लिख लेता हूं, मुझे याद रहना चाहिए ना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा. ऑक्सफैम का इनइक्वालिटी रिपोर्ट मैं देख लूंगा, मैं बता दूंगा कुछ डेटा. अदरवाइज हमने थियोरेटिकली लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है. ओके. ओके. नाउ हमने देखा कि थर्ड वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम है. राइट. ओके. एंड एक्सटेंसिवली वी हैव डिबेटेड डेवलपिंग का, वुमेन का, राइट, पुअर के ऊपर क्या है. अलग अलग ऑथर मैंने बताए हैं, गैलब्रेथ का, थियोडोर एडोर्नो का पहले बताया था, थियोडोर एडोर्नो एंड मैक्स हॉर्खहाइमर. जोसेफ स्टिग्लिट्ज का बताया मैंने. राइट. और फिर एक और नाम था ना. यस, माइकल अल्बर्ट का था. जेके गैलब्रेथ है, सासाकी सासेन है. दैट्स इनफ. राइट. सो
दैट इज द व्यू ऑफ। अब देखेंगे कि अब एक क्वेश्चन है, राइट, कि इज इट अ न्यू एंड इनएविटेबल प्रोसेस, दैट इज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन? Should we accept and welcome it? This is the questions about the judgmental. Now we can analyze the globalization, whether globalization should be allowed in developing countries or not, or should we join anti-globalization protest? Yeah, boliye. Yeah, it is already allowed in developing countries. It's already allowed, but should you accept it? Right, we are actually ये मैं पूछ रहा हूं, हमें कौन पूछ रहा है? हमें तो कोई नहीं पूछता है हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, राइट? हमारे तो अपने हाल पे छोड़ दिया गया है कि भैया तुम मानो न मानो, थोप दिया गया, राइट राइट, आप मानो न मानो आपको करना ही पड़ेगा। आपके पास ऑप्शंस नहीं है। अगर मान लीजिए कि स्मार्टफोन सब यूज कर रहे हैं तो आपको भी यूज करना ही पड़ेगा, है ना? No, that's true, right? That's true. There are 2-3 reasons for why, because ऐसा नहीं कि लाइफ, जब स्मार्टफोन नहीं थे तो लाइफ नहीं था, right? Life तभी था, and I think that was a better life, right? People used to talk to each other. There was जिनके घर में थोड़ा सा लिटरेचर का जरा प्रभाव है, वो बुक्स डिस्कस, वो हाँ, नए नए आइडिया, नए नई बातें हुआ करती थी, नए नई चीजें, इन्वेंशन हुआ करता था शब्दों में। अब क्या है कि हर दिन आप देखेंगे हम व्हाट्सएप में इतना इंफॉर्मेशन आ जाता है हमारे पास, फेसबुक में इतना इंफॉर्मेशन आ जाता है, ट्विटर में इतना इंफॉर्मेशन आ जाता है कि हमारा दिमाग अपना कुछ रह ही नहीं जाता है। हमारे दिमाग में सारा ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप का सारा गोबर हमारे दिमाग में भर दिया जाता है ना? And we are losing our own autonomy by our own self, right? घर में 4 लोग होते हैं, वो फेसबुक से फ्रेंड में लगे हुए हैं, चैट, बट आपस में इंटरेक्शन कम होता है, right? How social relationship is becoming narrow, right? We don't talk to our neighbor, right? Yeah, right, but we talk to people who are living at a long distance, right? But we, because पहले क्या था कि जब ये ग्लोबलाइजेशन नहीं था तो मतलब चाय के दुकान पे 10 लोग बैठा करते थे, या वुमेन एक दूसरे के इकट्ठा हुआ करती थी, बातें करती थी। नो नेसेसरी, नो नीड, राइट? द सोशलाइजेशन जो प्रोसेस था वो खत्म हो, डिसोशलाइजेशन हो गया है लोगों का, क्योंकि राइट, सो दैट इज द इम्पैक्ट ऑन द एवरीडे लाइफ। मीडियाइजेशन, राइट, एग्जैक्टली, सोशल मीडियाइजेशन, सब हम लगे रहते हैं। एक तो टेलीविजन आया तो टेलीविजन हमारा टाइम खाने लगा, टेलीविजन से थोड़ा टाइम कम मिला, थोड़ा टाइम मिलता है तो उसे ये मोबाइल खा जाता है, कंप्यूटर खा जाता है। जी बोलिए। एक कैफे ऐसे वहां पे लिखा हुआ है, नो फ्री वाईफाई, प्लीज टॉक टू ईच अदर। कहाँ पर? सर इधर MKT में है, एक मजनू का टीला कैंपस के पास है ना, नॉर्थ कैंपस। अच्छा, वहां पे क्या लिखा रहा है? नो वाईफाई, नो, जनरली लिखा होता है ना फ्री वाईफाई, कहीं पे भी किसी भी कैफे में इफ यू गो जनरल ये लिखा होता है, तो उन्होंने लिखा है नो फ्री वाईफाई, प्लीज टॉक टू ईच अदर। दैट्स गुड, हाँ, इट्स अ गुड वन। यस, इवन जो लोग जाते हैं, ऑफ कोर्स कि पहले कैफे कॉफी हाउस का एक अलग सा आइडेंटिफिकेशन होता था। कॉफी हाउस में लाके जाके लोग घंटों बात करते थे। अब क्या है कि बस आप कॉफी हाउस में कपल जाते हैं और दूसरा कोई नहीं जाता। पहले ऐसा नहीं था, कॉफी हाउस में इरिस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप लोग जाते थे और वहां पे बहस होती थी, वो इकोनॉमी पे बहस होती थी, फाइनेंस पे बहस होती थी, कल्चर पे बहस होता था, इंटरनेशनल
रिलेशन पे बात बहस होता था, कोई इंसिडेंट हो गया तो बहस होती थी, घंटों घंटों बहस होती थी, कॉन्सेप्ट को बहस किया जाता था कि ये है क्या, राइट। Yes, सो sir. देयर आर सम क्वेश्चंस जो लिखा गया है यहाँ पर कि शुड वी ज्वाइन द एंटी ग्लोबलाइजेशन प्रोटेस्ट, सिंपल क्वेश्चन, हु टेक टू द स्ट्रीट्स ऑफ सिटीज इन द व्हिच वर्ल्ड इकोनॉमिक लीडर मीट, जहां पे आप मीट होता है, ये इकोनॉमी आप देखेंगे G8 का मीटिंग होता है, राइट, या दावो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है एक, उसकी मीटिंग होती है दावोस में, जब मीटिंग होती है तो प्रोटेस्ट होने लग जाता है, राइट, या जब वर्ल्ड लीडर मिलते हैं पॉल्यूशन को कर, हाँ, तब एक लड़की आ जाती है और कहती है कि हाउ डेयर यू, राइट। Yes. तो शुड वी सपोर्ट दैट ग्रेट गर्ल जो कहती है कि हाउ डेयर यू, और शुड वी सपोर्ट दैट लीडर हु सैट, हमारा एक फ्रेंड कहता है कि दे मीट, दे ईट एंड दे चीट, राइट। बिल्कुल सही सर. The world leader, they meet each other and they They eat good food during that at meeting, 5-star hotel right, and 5-star cheat hotel, us. and they cheat people ki we are thinking on the behalf of you about the global economy, about the pollution, about blah and blah, right, about even poverty, right. आप देखिए बड़े बड़े पॉवर्टी का जो टॉक होता है उस पे एक टॉक में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, Yes. you know, and I knew when during my PG एक टॉक था पॉवर्टी के ऊपर, 7 करोड़ रुपए खर्चे हुए थे, 7 करोड़ रुपए, वो इतना जो है वो बाकी चीजों में अगर वो लगा दें तो वैसे राइट, पॉवर्टी खत्म हो जाए, इतना डिस्कस राइट, करने के लिए. राइट, और खाना और क्या पीना कुछ बाकी नहीं था वहां पर, हम्म. राइट। हम बात करें पॉवर्टी के ऊपर और खा कैसे रहे सुपर रिच की तरह, वैसे ये सब पावर में होते हैं और जो इस तरीके के मतलब लाभ उठाते हैं उन लोगों को बड़ी परेशानी हो रही होगी लॉकडाउन में, क्योंकि जब से बोला ये सब वीडियो कॉल करके करो, आपको हाँ, फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है कोई मीट हाँ, के लिए. वेबिनार करो घर में ही खाओ और घर का खाना खाओ, हाँ. उन लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही होगी, उनका सारा राइट, लीजर खत्म हो गया. राइट, राइट, कहीं जाना नहीं मिल रहा है उनको, हाँ, और खाने लेजर नहीं में. मिल रहा है, हाँ, इवन इंडिया में यू सी people go and eat and meet and eat so much of food, so much of drink, right, यस सर, उनका तो right, हर नाइट तो. unlimited, right, right, हर नाइट का होता है। Anyway, so क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, सिंपल क्वेश्चन बट यू शुड नॉट राइट इट। आइए अब ट्रांसफॉर्मेशन लिस्ट क्या बोलते हैं नहीं ग्लोबलाइजेशन तो के लिए। ये ऊपर आपने क्वेश्चन लिखे, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं या इन डिस्कशन से ना, हम लोग क्वेश्चन in discussions, you know, से this is हम लोग some moral questions and some ओके. questions that we think about it. You know, I'm not teaching you, I'm teaching you of course for your examination purpose of you, but I'm also teaching you to shape you, या. right. Teaching is not purpose कि चलो एग्जाम निकल जाए, उसके एग्जाम के बाद क्या सब वैनिश. वैनिश नहीं होना चाहिए, that should continue, right, right. So ये क्वेश्चन है कि you know that is the moral question आप, हाँ, कि should we focus you know on trying to harness benefit of the economic globalization, or should be accept skeptical about the extent of the changes, जो changes हो रहे हैं उसके खिलाफ हमें क्या expect, you know, skeptical होना चाहिए, right, right. We should think who is loser and who is gainer, कौन lose कर रहा है, कोई कौन gain कर रहा है, yes sir, right. So this is the particular few questions that we think about it. We do some mental exercise after our observation. हम जाते हैं सब्जी लेने तो हम देखते कि नहीं, आपको पता है कि 1990 से पहले there was no pavement dweller in India. Have you heard of pavement dwellers?
payment or Yeah. homeless. Yes, yes. Homeless is a homeless is a particular characteristic of the city. गांव में अभी भी होमलेस लोग होमलेस नहीं होता, राइट? ये मंदिर में लगाते हैं इतना पैसा, तो यहाँ इन लोगों को घर बना दे। अरे मंदिर में, वहां मंदिर होता है, मंदिर के बाहर देख लीजिए। तो मंदिर के बाहर, राइट, मतलब my intention is not to hurt someone's religious sentiments, no, लेकिन no, 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 that's true. मंदिर बनाने में why to waste मतलब money? But कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाओ, घर बनाओ। Exactly. If you pay, the forces of globalization has created homelessness, right? So we should think about who have lost and who have gained. Okay. Right. So simple question है. Now come to the transformationalist. वो क्या कहते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में? क्या कहते हैं आप भी कह सकते हो, आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये क्या कह सकता है। आपको ये भी अंदाजा लग गया होगा कि ये इंटरनेशनलिस्ट क्या कह सकता है। वही है, ये तो ये कि भाई जो भी ये दोनों बोल रहे हैं, चाहे पेसिमिस्टिक हो और ये ग्लोबलिस्ट हो और इंटरनेशनलिस्ट, तो उनके बीच का कि भाई नहीं ऐसा ये नहीं, मध्यम मार्गी है। तो पहले हम इंटरनेशनलिस्ट डिसाइड कर लेते हैं, इंटरनेशनलिस्ट की बात कर लेते हैं, फिर हम जाते हैं ग्लोबलिस्ट की, ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट। आसान होगा। अब इंटरनेशनलिस्ट कहता है कि देखिए इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है, आप कहेंगे कि ये इतना माइग्रेशन हो रहा है, ट्रेड का माइग्रेशन हो रहा है, कॉमर्स का माइग्रेशन हो रहा है, हाँ, कम्युनिकेशन इधर से उधर हो रहा है। क्या ये 16th सेंचुरी में नहीं हो रहा था? क्या ये 19th सेंचुरी में नहीं हो रहा था? क्या ये 20th सेंचुरी में नहीं हो रहा था? तब भी हो रहा था, राइट? तो आप जो कह रहे हैं कि इट इज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, योर स्टेटमेंट इज ओवर स्टेटमेंट, राइट? यस सर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि दे आर सेइंग, पहले भी आप ओवर स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप ओवर स्टेटमेंट दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि देखिए देयर आर कंटिन्यूटी विद द इंटरनेशनल इकोनॉमिक पैटर्न इन द पास्ट। ये जो अभी हो रहा है वो पहले भी हो रहा था। दिस इज अ पैटर्न। पहले भी ट्रेड होते थे, पहले भी कम्युनिकेशन चैनल था, पहले भी फ्लो था, कैपिटल फ्लो भी था, और आज भी है, राइट? So international economists argue that this economic interaction and interconnectedness are nothing new, right? Yes sir. They are मैंने लिखवाया है, they are the old wine in the new bottle, right? Yes. And national economy remain a valuable and indeed a primary economic category in international world. अभी भी जो नेशन स्टेट की इकोनॉमी है, दैट इज प्राइमरी, राइट? ओके। एग्रीकल्चर, यस सर। राइट, एग्रीकल्चर नहीं, प्राइमरी यू से, नेशन स्टेट इज प्राइमरी डिसीजन मेकर इन द इंटरनेशनल ट्रेड। प्राइमरी मतलब प्राइमरी सेक्टर मत पे चले जाइए। ओके ओके, आप लिख लीजिए इंटरनेशनलिस्ट व्यू, लिखिए, एक दो पॉइंट लिखा देता हूँ, लिखिए इंटरनेशनलिस्ट पॉइंट, इंटरनेशनल व्यू। They think that the concept of economic globalization, the concept of economic globalization is oversold and overstated.
राइट, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखिए, it is not new, it is not new, it is continuity, it is continuity of the past, continuity of the past. It is not new, it is continuity of the past. World was connected through trade, commerce, capital, and communication. There were migration in the past too. जी क्या बोले आप? नहीं, वो वर्ड पूछ रही थी सर मैं। हाँ, क्या कोई दिक्कत है किसी वर्ड में? पता लग गया सर। चल, ओके डन सर। डन, ओके। थर्ड पॉइंट लिखिए, PSIR में पॉइंट्स में नहीं लिखते, पैरा में लिखते, ऐसा कुछ है क्या? मतलब पॉइंट्स में लिख सकते नहीं? लिख सकते हैं, इसी पॉइंट को पॉइंट हटा दीजिए, पैरा हो जाएगा। नहीं, मैंने बहुत सा मतलब ऐसे सुना है स्टूडेंट्स को कि GS में पॉइंट्स में लिखो, लेकिन ऑप्शनल में उसमें लिखो। पैरा में तब होता है, पैरा में इसलिए अच्छा होता है कि जब आप ऑथर का नाम लिखते हैं ना, तो ऑथर लिखते हैं, फिर उसके बारे में उसका एक व्यू आता है, और उसको व्यू लिखते लिखते इतना बड़ा हो जाता है, वो एक आपका पूरा 3-4 लाइन बन जाता है, राइट? यस सर। इसको वो पॉइंट में ऐसे देंगे तो अच्छा नहीं लगता। पॉइंट तो अच्छा लगता है कि एक लाइन में आप कह दे बात को, राइट? यस सर। हाँ, अदरवाइज उस पॉइंट जैसे मैंने ये लिखा है ना 1 2, इसको हटा दीजिए, ऐसे मत लिखिए और ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे समझने के लिए यहाँ पर आपको लिखवा देता हूँ। नहीं मतलब अगर पॉइंट्स भी लिखना भी चाहिए लिख सकते हैं ना। डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन में वहां पर ऑथर्स के व्यू आएंगे, बहुत बेटर यू राइट इन पैरा, क्योंकि वहां पर हाँ अपना व्यू नहीं आता, आपके ऑथर्स के व्यू आते हैं, राइट? यस सर। अच्छा, लिखिए, नेशन इकोनॉमी, नेशन स्टेट, internationalists argue that nation state is still main actor in international trade and commerce. International trade and commerce. Yes, sir. Yes. International bodies, इसको पैरा चेंज कर दीजिए, international bodies, yes sir, like WTO and IMF yes sir, have delegated power by the nation state. People are insane here. Delegated power. Yes sir. कहाँ पर insane है? Sorry sir, sorry. वो actually मतलब someone is playing so much loud music here.
यू नो यही तो है क्या बंदर के हाथ में नारियल की बात है, यही इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, देखिए ना। Yes, हाँ sir. मतलब they हाँ, do not think about others. मतलब someone is माय studying, गॉड, someone is माय working, गॉड। someone is ill. हाँ 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 हाँ, राइट 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 राइट। मतलब खुद इंजॉय करो, दूसरों को भी कराओ, चलो सब सुनो। हम्म जबरदस्ती थोपते हैं ना। Yes, sir. हम्म हम्म। हाँ, क्या लिखा इस आपने? मामले में सर फॉरेन कंट्रीज अच्छी है, मतलब वहां पे सो मच स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू कांट इट्स इवन मेक नॉट नॉइज। इट्स नॉट अबाउट रेगुलेशन, वहां पे लिबर्टी ज्यादा है, बट पीपल आर हैव सम सिविक सेंस, या राइट। वहां पर सिविक सेंस है कि रेड लाइट होगी तभी हम गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, और ये भी सिविक सेंस है कि अगर कोई पैदल आ रहा है तो गाड़ी को हम ब्रेक लगा दें। यहाँ पे तो कोई सिविक सेंस ही, रेड लाइट है तो भी बीच से घुसा लेंगे अपना आराम से। सर ये वही है ना, मतलब आप कितना भी मतलब पढ़ लिख जाइए, लेकिन एथिक्स सिविक्स नहीं है तो फिर मतलब नो यूज। सिविक सेंस नहीं है, हम्म civic value. If you don't have civic value, you know, you are not entitled to be a citizen, right? है सिटीजन कोई बात नहीं, आप कहते हैं सिटीजन, बट इफ यू डोंट हैव सिविक वैल्यू ना, आप देखेंगे बड़े जो लोग होते हैं उनके पास सिविक वैल्यू बहुत बड़े होते हैं, right? They are या very disciplined, right? Especially when there is it comes to the relation with the other people, कि मैं से कैसे बिहेव करूं कि आपको बुरा ना लगे, right? या यस। हम्म अच्छा, आपने लिख लिया, नेशन स्टेट इज स्टिल अ मेन एक्टर इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। Yes, sir. International bodies like WTO and IMF have delegated power. हाँ, गिवन बाय नेशन स्टेट। Nation states are following because their interests are being served. They may reject it. They may reject it at any point of time. Yes, sir. The penetration and the interpretation and reinterpretation of economic globalization, the interpretation and reinterpretation of economic globalization is story of US and Europe. Sir, the interpretation and reinterpretation About the story about the economic globalization is US and Eurocentric. yeah, yes, sir. Eurocentric, right? Is US and Eurocentric. हाँ, Eurocentric. Okay. US centric and Europe centric. उसका मतलब ये Right. हुआ ना? हो गया। वो अभी भी नेशन स्टेट को ये मानते हैं। अब लिखिए ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट। इसमें लिखिए ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट व्यू ऑन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। Yes, sir. Transformationalist view on economic globalization. लिखिए, they think that
that globalists are exaggerating. Okay, globalists are exaggerating and transnationalists are ignoring the concept of or the process of economic globalization. Right? Yes, sir. Yes, sir. देखिए the world is transforming and ऐसे लिखिए पहले अभी मत लिखिए world is transforming लिखिए the international trade and commerce capital flow goods and services have increased along with nation states interaction Yes, sir. with nation state interaction, right? Yes, sir. They are interacting each other and a new global pattern is coming up. Yes, sir. Okay. Nation state works together with global institution. Nation state works with global institutions and multinational corporation. Multinational corporations या कंपनीज लिख लीजिए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ऐसे लिखते हैं. Yes, sir. The world is going a fundamental change. The world is going under fundamental change. Fundamental change. Yes, sir. And transformation. Yes, sir. We need to understand the global economy. We need to understand global economy from different perspective. Yes, sir. Because globalization is a diverse and complex phenomena. Yes, sir. Done? Yes, sir. Okay. अब क्या है कि तीनों पर्सपेक्टिव जान गए आप.
Yes. अच्छा, अब क्या है कि क्वेश्चन है कि जो ग्रुप बन रहे हैं, आप देखेंगे G8 ग्रुप है। आपने G8 का नाम सुना है? अब तो पर ये G7 हो गया ना, रशिया हट गया। रसिया हट गया, राइट। पहले G5 था, फिर G7 बना, और फिर G8 बना, और फिर से G7 बन गया, राइट। ओके। यस सर। आपने ग्रुप 77 का नाम सुना है? G77? नहीं, ये नहीं सुना। नहीं सुना है, कोई बात नहीं। आपने EU का नाम सुना होगा? यस। आपने सार्क का नाम सुना होगा, एशियन का नाम सुना होगा, नाफ्टा का नाम सुना है होगा, एपेक का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं सुनिए, राइट। ये सब तो सुने हुए। आपने मर्कोसुर का नाम सुना होगा, राइट। साउथ अमेरिका, जो साउथ अमेरिकन में कॉमन मार्केट है, इसका नाम है मर्कोसुर। एक है मर्कोसुर, साउथ अमेरिकन कंट्री, लैटिन अमेरिकन कंट्री में एक कॉमन मार्केट है जिसका नाम है मर्कोसुर। पढ़ाएंगे सबको पढ़ाएंगे। गल्फ GCC है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, राइट। फिर है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, फिर है ग्रुप ऑफ 3 कोलंबिया, मैक्सिको, वेनेजुएला। फिर आपने ब्रिक्स का नाम सुना होगा, यस। या G4 का नाम सुना होगा, या आपने क्वाड का नाम सुना होगा। यस। यहाँ क्वेश्चन ये है, इतने सारे इंस्टीट्यूशन का नाम बताने का मतलब ये है कि इज इट दैट द स्टेट इज बीइंग इंटरनेशनलाइज्ड? कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं इस पीपीटी में ये बोल रहा हूं कि एक तो नेशन स्टेट है, हाँ, जो एक एक्टर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, है ना? यस सर। अब क्या जो नेशन स्टेट को हम इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, बना ग्रुप 7 बना के, G7 बना के, या G8 बना के, या क्वाड बना के, या EU बना के, और इज इट दैट इट इज रीजनलाइजेशन? कि ग्रुप बना रहे मतलब एक है ना कि G8 क्या है, बड़े डेवलप्ड कंट्रियों का एक ग्रुप है ना? और EU क्या है, यूरोपीय यूनियन, यूरोप में रहने वाली कंट्री का एक ग्रुप है। सार्क क्या है, साउथ एशियन कंट्री का ग्रुप है। तो इट इज ए डिबेट वेदर वी कॉल इट ग्लोबलाइजेशन और वी कॉल इट रीजनलाइजेशन। बट पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया कि रीजनलाइजेशन इज नॉट अ ग्लोबलाइजेशन, बताया था आपको? यस सर। या सो रीजनलाइजेशन इज नॉट अ ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन का जो है क्लास वो आज खत्म हो रहा है, कल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शुरू करेंगे। और मैं 3-4 दिन से सोच रहा हूं कि फॉरेन पॉलिसी आपका कुछ बचा हुआ है, पाकिस्तान रिलेशन, फिर अफगानिस्तान कर लेंगे हम लोग कभी। और पाकिस्तान को खत्म करके मैंने अफगानिस्तान पे भी बहुत कुछ बनाया पढ़ाने के लिए, बट टाइम ही नहीं मिलता है। करेंगे हम इसको भी, राइट। ओके सर। तो कल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ेंगे हम। ओके सर। सी यू देन। ओके, बाय सर। बाय सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम।